Okay, so hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. So tell me, how are you everyone? केमिति सब अच्छा? समस्तଙ୍କୁ good evening और स्ट्रिप स्टार्टिंग रू कौन मैसेज करके डिलीट कर देले? Okay, anyway, so आपण मानकर बहुत सारा लाइक क्वेरी हिस्ट्री ऊपर एंड आजिर सेशन जेमिति आपण मानकू गोटे गवर्नमेंट ऑफ लाइक आपन इंडिया रे हो ओडिसा रे हो जो सब न्यू पोस्ट अपॉइंटमेंट पाई चंती तो सब ऑफिशियल्स मानकर आपन पाखु गोटे क्लास ने के आस्तिली सेटा जति कि इंपोर्टेंट थिला आज ठीक सेही भलिया गोटे क्लास जोटा कि जेते ब्रिटिशर्स माने हम ओडिसा सहित रिलेटेड अछंती कोट ना कोट तांको ऊपर क्वेश्चन पछारे दिए तो आज सब ब्रिटिशर्स मानकु स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत गोटे क्लास रे देखि देबा तो एनीवे आपन को जे कोनोसी एग्जाम रे आपन जदी ब्रिटिशर क्वेश्चन पछारछि ताहाले आपन माने एक क्लास को खोजि देबे पाइछि ओके तो फर्स्ट थिंग हाँ प्रियंका थैंक यू भल अच्छी देखि दियो अगेन कहूची 1599 आपण मानकर बैच प्राइस कहार ना स्पंदन जोटा कि सीजीएल मेंस आपणकर जदि आपण माने मो कोड एसपीसी 10 यूज करूछंती ताहाले आपण मान को 10% रो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलि जिवो ओके आउट ऑफ दैट जदि आपण माने सहकारी बैच नउछंती जूनियर असिस्टेंट पई ताहाले 1199 ने भी आपण माने बैच पाई परिवे एंड जदि आपण माने अपकमिंग आर एग्जामिनेशन उडा आपनकर 22 रे अछि सेटा जदि एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करूछथि ताले मॉक टेस्ट विजय टेस्ट सीरीज आपण मान नै परिबे जोथरे आपण मान को नॉट ओनली कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा जाउछि ता सहित लाइव डिस्कशन भी प्रोवाइड करा जाउछि एंड देखि नंतु फर्स्ट क्वेश्चन आजिर कोन अछि समस्त रेडी तो रोहित ओके आसा तो मते कहि दियो आजिर फर्स्ट क्वेश्चन पचारिछि हु ऑर्डर्ड द फॉर्मल एनेक्शन ऑफ ओडिशा इन 1803 1803 मसिया रे फर्स्ट थिंग आपण मान को कहि रखुची इंपोर्टेंट ईयर उडा को टिके मने रखि दियंतु ओके कोन कहूची ना फर्स्ट थिंग आपण माने मने रखंतु 1798 मसिया टा केते कहली 1798 को कहली जेते बेले ये माने आपण ब्रिटिशर्स माने आसी कि अराइव्ड रे पहुंची माने आपण इंडिया रे आसी कि अराइव्ड हेले एंड एज अ गवर्नर जनरल आपनकर फर्स्ट साइन करिथिले फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी आपण माने कहि परिबे तो सब्सिडियरी ट्रीटी विथ का सहित ना निजाम ऑफ हैदराबाद सहित तो 1798 रे आपनकर कोन अराइव्ड सहित ट्रीटी साइन हेइथिला कहा सहित ट्रीटी साइंड विथ निजाम ऑफ हैदराबाद ओके सो हियर हमें कहि परिबा राइट आंसर कोन समस्त ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सली को सहित हमें रिलेट करूचे एटा थला 1798 तापर 1799 रे आपनकर कोन हेइथिला ना आपनकर ब्रिटिश साम्राज्य जतबे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हेइथिला जतरे कि टिपू सुल्तान कर डेथ हेइथिला सेते बेले आपनकर नेक्स्ट एनेक्शन हेइथिला जरा कि मैसूर टेरिटोरी आपनकर तांको अंडर पळेइथिला तापर आपनकर पुनी 1800 रे आपनकर फोर्ट कोडी विलियम कॉलेज आपण माने मन रखिथिबे कोन कोलकाता रे आपनकर प्रतिष्ठा हेतिला 1800 मसिया रे एक्जेक्टली फोर्ट विलियम कॉलेज को जगह रे आपनकर प्रतिष्ठा हेतिला कोलकाता रे को मसिया रे हेतिला 1800 मसिया रे एटा भी आपण मानकू क्वेश्चन पचारिबो सो एमिति धीरे धीरे हेकि आपनकर 1803 मसिया रे जते ऑक्युपेशन हेला लॉर्ड वेल्सली ओडिसा को ऑक्युपाई करथिले देखि दियंतु द फॉर्मल एनेक्शन ऑफ ओडिसा 1803 वाज ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड वेल्सली द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1798 रो 1805 पर्यंत तांकर सब इंसिडेंट एटी मेंशन करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो पचारि कि हु ऑब्टेन्ड द दिवानी राइट्स फॉर ओडिशा इन 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जेते बेले बैटल ऑफ बक्सर कहूची गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग गाइस मते टिके आंसर देइ दियो तापर त माने जा कहबो मु सुनुछ हैला एबे कहिची कोन ना हु ऑब्टेन्ड द दिवानी राइट्स कहिला for Odisha in 1765 after the battle of Buxar forest 1803 occupation हेइथिला किंतु 1765 कहूची माने दीवानी राइट कहूची माने बैटल ऑफ प्लासी ता सहित आपण माने कहां को रिलेट करसंती ना रॉबर्ट क्लाइव को सहित रिलेट करेइबे Robert Clive obtained the Diwani rights for Odisha in 1765 after the battle of आपनकर कोन battle of बक्सर हेतिला 1765 पर सॉरी 1757 रे आपनकर बैटल ऑफ बक्सर हेतिला तापर आपनकर बैटल ऑफ आपनकर जो प्लासी थिला दैट वाज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया फर्स्ट आपनकर कोटा जीतिथिले ना आपनकर बक्सर जोटा कि 57 रे थिला एटा आपनकर बैटल ऑफ बक्सर 17
1757 रे बैटल ऑफ बक्सर थिला ये आपनकर कोन प्लासी हैला चलो नेक्स्ट मते कहि दियो सो द ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव आपनकर ईस्ट इंडिया कंपनी थिला पर तांको तरफ रु के थिले रॉबर्ट क्लाइव थिले obtained the Diwani right to collect revenue for Bengal, Bihar and Odisha in 1765 ता सहित मन रखो मुगल एम्परर किए थिले एटा भी क्वेश्चन पचारिबो शाह आलम 2 आपनकर थिले 1765 रे आपनकर जो साइन हेतिला दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ग्रांटेड हेतिला कंपनी आपनकर लीगल रेवेन्यू कलेक्शन राइट ताकू मिलिथिला सेटा ही आपनकर दीवानी राइट व्हाट इज दीवानी राइट आपन माने समस्त भाबुतबे कोन ना कंपनी को लीगल अथॉरिटी दिया जाइथिला कि दे कैन कलेक्ट करि परिबे द लैंड रेवेन्यू एंड 1765 रे आपनकर डुअल गवर्नमेंट आसीथिला डुअल गवर्नमेंट सेपरेट पावर आपनकर मिलिथिला माने कंपनी आपनकर डुअल गवर्नमेंट को सेपरेट पावर देइथिला फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटी नवाब मानक थ्रू हैला तापर 1770 रे इंसिडेंट हेतिला आपनकर ग्रेट बेंगल फेमाइन आपनकर आसीथिला हैला नेक्स्ट चलो मते को व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर्स लेड द ब्रिटिश march from Ganjam and captured Puri and Cuttack in 1803 Ganjam कहूची रिलेट करके देखा मने पकेलो कोन कहिछ राइट आंसर उल्टा कहि देली कि अच्छा आपनकर जो बक्सर एंड प्लासी को आपन मानकर उल्टा करी कहि देली कि हां 1757 को 60 what a minute 17 battle of Buxar sorry माने मिस्टेकली कहि देछि battle of Buxar आपनकर 1765 परे after the battle of Buxar 1757 आपनकर कोन हेतिला ना battle of Plassey एटा गोटे उल्टे दियो फ्लोरे कहि देछि आ उल्टे दियो ठीक अछि नेक्स्ट चलो तमते पुणी कहि दियो व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर्स लेड द ब्रिटिश मार्च फ्रॉम गंजाम तर पछे आपन को गंजाम को ताली रेट कोन करि परिबा क्विकली आंसर दे देला देखि देखो जो ब्रिटिशर्स मानक ना कहूची सबुटा आपनकर इंपोर्टेंट रहिबो लेड द ब्रिटिश फ्रॉम द गंजाम एंड कैप्चर्ड द पुरी एंड कटक इन 1803 रे आपनकर आसीथिले जे कि जेते बेले पुरी कथा आसीला कटक कथा आसीला आपन मानक माइंड रे जणे आसीबा दरकार कॉर्पोरेट बाकी मोर्गान को आपन मान को कहा साथ रिलेट कर दिली बालेश्वर सहित रिलेट करैथिली हो ना नहीं मते को यस और नो पक्का तो पुरी आपनकर केबे कैप्चर हेतिला एग्जैक्ट डेट जदी पछारिबो ताहाले मन रखो सितंबर 1803 रे आपनकर पुरी कैप्चर हेतिला ओके पक्का तापरे 12 बाटी भी आपन को क्वेश्चन पछारिबो जदी 12 बाटी पछारी देला जदी पछारला 12 बाटी केबे आपनकर ऑक्युपाई हेतिला ना अक्टोबर 1803 सेप्टेम्बर रु अक्टोबर मास हो जाइतिला एटा मन रख परिबो ओके तापर आपनकर लैंड लीज हेतिला डिफरेंट आपनकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मानकर थिला ओके नेक्स्ट चलो बट ए जो बरमूल पास अछि एटा इंपोर्टेंट गाइस मने रखो बरमूल पास कोठी आपनकर अछि बौद्ध टी अछि करेंटली आपनकर बरमूल पास बौद्ध टी अछि तो नवंबर 2 1803 मसिया रे बरमूल पास देकी ऑक्युपाई करिथिले स्ट्रेटेजिक प्लान तांकर थिला पुरी को पहुंचबा लागि हैला नेक्स्ट चलो मते अगेन कहि दोछि गाइस के थिले ना लेफ्टिनेंट कर्नल हरकट थिले लेड द ब्रिटिश फोर्सेस फ्रॉम द गंजाम टू कैप्चर पुरी एंड कटक इन 1803 he commanded the southern division of the British army capturing Puri on September 18 1803 and subsequently seizing the crucial Barabati fort in Cuttack October 14 1803 okay next question mate ko na who captured Baleswar on September 22 1803 exactly date oda apan को क्वेश्चन ने भी दोउची सेटा भी इंपोर्टेंट गाइस मने रखिबो सेप्टेम्बर 22 सेतबे कहूची 1803 मसिया कथा ताहाले आपण माने कहा सहित रिलेट करिवे बालेश्वर आसिला माने आपण मान को कोन कहितली कैप्टन मोर्गन का सहित रिलेट करिवे तो कैप्चर करिथिले बालेश्वर को ऑन सेप्टेम्बर 22 1803 रे कैप्टन मोर्गन कोन लीड करूथिले ब्रिटिश फोर्सेस को फ्रॉम द मिदनापुर टू कैप्चर बालेश्वर ऑन सेप्टेम्बर 21 1803 मसिया रे सक्सेसफुली ताको कोन ऑक्युपाइड करिथिले पहुंचीतिले सेप्टेम्बर 21 रे तापरे 22 रे आपनकर कोन ऑक्युपाइड करथिले एतिक जिंस मन रख परिबो कोठू मिदनापुर आपनकर बेंगल अंडर रे थिला मिदनापुर को डिमांड करिथिले बट सेतबेले मराठा साम्राज्य थिला तो मराठा माने चाहिलेनी देबा लागि तो बाध्य होई कि से कोन मिदनापुर आसी कि बालेश्वर मिदनापुर तो ऑक्युपाई करि देले तापरे बालेश्वर आडू आसीले नेक्स्ट चलो सो अगेन होची कैप्टन मोर्गन ऑन 22 सेप्टेम्बर 1803 रे ऑक्युपाई करथिले बालेश्वर को आफ्टर दैट मते को व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर कॉन्कर्ड संबलपुर इन जनवरी 1804 by defeating the Maratha संबलपुर को ऑक्युपाई किए करथिले मते कहि दियो मैम हो
आंसर दिया मते व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर कॉन्कर्ड संबलपुर इन जनवरी 1804 बाय डिफीटिंग द मराठास जेते बेले मराठास मानको कथा कहूची संबलपुर कथा कहूची मराठा छाड़ी दियो आपण मानकर कोन ईयर छाड़ी दियो जेते बेले आपण को संबलपुर कहूची इंपोर्टेंट आपण को दीटा जिंस मन रखंतु वन इज द ईयर अनदर इज द पर्सन तो मेजर ब्रॉम्पटन जेते बेले आपण को मोर्गन कहूची बालेश्वर सहित रिलेट करिवे हरकट कहिले आपण माने कोठी ना पुरी सहित कटक एठी रिलेट करेइबे मेजर ब्रॉम्पटन आपनकर केबे 1804 मसिया रे रिलेट करिवे कहा सहित ना संबलपुर को ऑक्युपाई करिथिले को ट्रिटी ना आफ्टर द मराठा साइन द ट्रिटी ऑफ देवगांव कोन ट्रिटी ऑफ देवगांव जेते बेले कटक आपनकर ऑक्युपाई हेथिला जस्ट आफ्टर द साइनिंग ऑफ द ट्रिटी ऑफ देवगांव आपनकर कोन ना ऑक्युपेशन हेथिला संबलपुर सी ना मेजर ब्रॉम्पटन वाज ब्रिटिश officer who conquered Sambalpur on January 2, 1804 by the defeating the Marathas governor Tantia Parnavis. This victory occurred during the Second Anglo-Maratha War, allowing the British forces to take control over the region and secure treaty with the local queen Kekle Ratna Kumari thile apanakar. Clear? Next chalo mate kahi diyo again gote question. Okay, देखो who was a member of the commission appointed to administer the newly conquered Odisha territories जते बेले newly कथा कहूची that means आपनकर कोन Odisha territory आपनकर newly केते बेले conquered हैला मते कहि दियो क्विकली कोन कहूची राइट आंसर टिके दियो कोन कहिची आउ थरे देख टिके क्वेश्चन को कोन कहिची who was the member पचारी छी मने रखो member of the commission किए थिले जे कि आपनकर कोन who was a member of the commission appointed to administer the newly conquered Odisha territory एमन का भीतर के थिले मेंबर एठा आपन को डायरेक्टली पचरनी जदी डायरेक्टली पचर थांदा ताहाले आपन माने हरकम को रिलेट करै थांदे जेहेतु डायरेक्ट आपन को किए ताको कमिशन करथिले पचरना जदी कमिशन पचरि थांदा ताहाले आपन माने हरकट रिलेट करथांते बट हियर राइट आंसर आपन कर कोन हेबे ना मेलविली केतरा ऑप्शन ए देचो बी सब बी दोचो एमपी कोथि पई देखो किए हेले ना रॉबर्ट केर was appointed yes Robert Kerr was appointed as the first commissioner of the Cuttack commissioner भाबरे किए थिले ना रॉबर्ट केर in 1805 but John Melville member of the commissioner appointed to the administer the newly conquered Odisha territory civil commissioner he was appointed as one of the two commissioner for setting the affairs of the Cuttack तो मेंबर किए थिले ना आपनकर मेलविली थिले तांकर मेंबर्स एतिकी जिंस मन रख परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुआ who was appointed as the first British resident of Ganjam in 1766 कथा कहिची कि आपनकर गंजाम रो फर्स्ट रेसिडेंट भाबरे अपॉइंट हेथिले मते किए कहि परिबो क्विक कहिची जॉन बीम्स ओके देन कहिची एडवर्ड कॉर्सफोर्ड देन कहिची मेजर फोस्टर देन कहिची कैप्टन आरटी लेक क्विक मैम मु डी देची ओके पळी तमे डी देचो ते ताले भलो कथा रिवीजन हेसिबो यार आंसर टिके मते दे दियो कोन हबो राइट आंसर क्विक जल्दी जल्दी आंसर दे दियो कोन हबो ना द फर्स्ट ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ गंजाम अपॉइंट हेचंदी 1766 रे सी आपनकर किए एडवर्ड कॉर्सफोर्ड किए हेबे एडवर्ड कॉर्सफोर्ड एन इंग्लिश इंजीनियर was appointed as the first British resident of Ganjam in 1766. An order from the council was passed on December 2nd, 1766, appointing him to oversee the region following the British acquisition of the northern circus through he formally took charges in 1768. एथिक जिन समन रख परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचाछि देखो ना व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ राजा मुकुंद देव द्वितीय ड्यूरिंग द खोर्धा अपराइजिंग 1804 कथा पचारिछि माने आपनकर जय राजगुरुंग पीरियड कथा पचारिछि एठी राजा मुकुंद देवंकु किए हरैथिले एक्जेक्टली तांको ना पचारुछि मेजर एसबी एमपी आपनकर कैप्टन हिकलैंड आपनकर एडवर्ड एमपी और मेजर फोस्ट देखिए राइट आंसर कोन दबो आम गंजाम रा क्वेश्चन 100% श्योर आंसर हो देला आंसर दे देला देखि गंजाम पिला आंसर दियो ऑप्शन डी ए त मार खाइगला राइट आंसर आपनकर कोन हबो डिफीट करथिले राजा मुकुंद देव को ड्यूरिंग 1804 रिवोल्ट रे ही वाज आपनकर कैप्टन हिकलैंड के थिले कैप्टन हिकलैंड थिले मन रखो कर्नल हरकट आपनकर वाज द ब्रिटिश ऑफिसर हु कमांडेड द फोर्सेस दैट डिफीटेड द राजा मुकुंद देव किंतु एक्जेक्टली तांको हरैथिले किए ना कैप्टन हिकलैंड फॉलोइंग द अपराइजिंग लेड बाय द जय राजगुरु मन रखिबो ती माने हिकलैंड सहित रिलेट करेबो आपनकर जय राजगुरुंग पीरियड हैला बक्सी जगबंधुकर आसुची व्यस्त हुआनी नेक्स्ट मते को हु बिकेम द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रिब्यूटरी
महल्स इन 1814 1814 मसिया कथा कहिछि द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द ट्रिब्यूटरी महल्स who dealt with the गजट स्टेट्स मुगल बंदी गजट से पीरियड आपनकर थिला ओके तो मते कहि दियो जो गजट स्टेट्स माने थिले तांको आपनकर को माने ऑक्युपाई करथिले मते को किए थिले द ब्रिटिश गवर्नर किए थिले जॉन मेलविली तांको सहित रिलेट करैबनी देन आपनकर टी रेभेन्सा तांको छाडी दियो एजुकेशन पाखु कॉलेज बाठी देन आंसर कोन हबो एडवर्ड इम्पिंग का सहित जिबा ही वाज द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रिब्यूटरी क्लियर देखो Now, Edward Impey, the Cuttack Judge cum magistrate thile, was appointed as the first superintendent of the tributary mahals in 1814 मसीहारे. एतिकी जिनसा clear. Next question आसा. मते को which British officer spent years trying to capture वीर सुरेंद्र साई. वीर सुरेंद्र साई को पाई बहुत टाइम से कोन स्पेंड करिथिले सेही आपनकर संबलपुर रीजन ने जस्ट बिकॉज़ तांको कैप्चर करिबा लागि तांको पछरे बहुत लागिथिले तो किए थिले से मते किए कहि परिबो जल्दी मेजर फोस्टर कैप्टन हिकलैंड को छाड़ी दियो पळे आसो हैला मेजर एचबी इम्पी और बोथ ए एंड सी ये हेबे राइट आंसर क्विक बोथ ऑप्शन देखि कि टाइम पड़छ ना कि एक्चुअली अधिक टाइम के आपन को देथिले कहले फोस्टर आउ थरा कहूची जदी फोस्टर आपनकर ऑप्शन ने अछि ताहाले ओनली फोस्टर जीवो किंतु जदी एचबी इम्पी अछंती ताहाले ये भी राइट आंसर हेबे सो बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर सी कौन कहूची ना सेवरल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स इंक्लूड मेजर फोस्टर कैप्टन आरटी लेक एंड मेजर एचबी इम्पी ए तीन जन ताकू को रिलेट करके मन रखिबो स्पेंट इयर्स अटेम्प्टिंग टू कैप्चर और सप्रेस वीर सुरेंद्र साई हु लेड ए लॉन्ग लास्टिंग रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन संबलपुर ओके नेक्स्ट कौन कहूची देखो ना हु अडॉप्टेड द कंसिलेटरी पॉलिसी आंसर सब दोउछ ना नाही मते कुओ हो गवर्नमेंट ऑप्शन देखि कि राइट मार देला तो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दबा देखि हो मते को हु अडॉप्टेड द कंसिलेटरी पॉलिसी टुवर्ड्स सुरेंद्र साई's rebels as deputy commissioner of संबलपुर deputy commissioner of संबलपुर भाबरे की अछन क्विकली कहिलो deputy commissioner of संबलपुर आपण माने को एठी तीन जन को रिलेट करैथिली एठी तीन जन को रिलेट करैथिली कोन फोस्टर लेक एंड इम्पी यांका भीतर हुई जणे हेबे एठी ऑप्शन टिके देखि दियो कोडा अछि तीन जन जाक तो अछन आपण माने कंफ्यूज हेबा लागि बट कीप इट इन योर माइंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ संबलपुर who adopted the conciliatory policy exactly कहिछि एठी आपण माने मेजर एचबी इम्पिंग को रिलेट करैबे टुवर्ड्स द सुरेंद्र साई rebels clear C yes measure HB MP adopted the conciliatory policy towards Surendra Sai rebels after taking charge as the deputy commissioner of Sambalpur on April 1861 okay next chala mate kuho which British officer attempted to capture Surendra Sai but faced strong resistance from the tribal जमींदार्स जेते बेले सुरेंद्र साई को कैप्चर करिया को ट्राई करिथिले दैट ब्रिटिश गवर्नर दैट ब्रिटिश ऑफिसर सेते बेले ट्राइबल लोक माने ट्राइबल लीडर्स माने ताको स्ट्रांगली अपोज करथिले तो किए थिले मते किए कहि परिबो हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन आरटी लेग एमपी देखो ए दि जन को तो रिलेट करैबनी तमानु कहिथिली लेग हेले एमपी हेले एंड आपनकर आउ के थिले ठीक फोस्टर हेले ए तीन जन को आपण माने संबलपुर साथ रिलेट करिवे ताहाले कैप्चर करिवा को किए ट्राई करथिले बट फेस करिथिले सो ही वाज नॉन अदर देन लेक किए लेग गुरुमा निमांसा हां तो लेट रसो चुपचाप क्लास करना काई गोटे मत रखुछ आसो द ब्रिटिश ऑफिसर हु अटेम्प्टेड टू कैप्चर सुरेंद्र साई बट फेस्ड इंटेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्राइबल जमींदार्स particularly during the 1857 uprising captain at the leg he was okay next कौन अछि देखो now which British officer was killed during the tribal unrest in the Ranpur state in 1939 जेते बेले आपण मानन को रणपुर कथा कहूची रघु दिवाकर माने पडुछथि त मते कहले द ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड ड्यूरिंग द ट्राइबल अनरेस्ट इन द रणपुर 1939 की आपण कर थिले के थिले बेजल गेट वेरी गुड मेजर बेजल गेट थिले रघु दिवाकर यस त कोन राइट आंसर कोन दोछ ना बेजल गेट ही थिले नेक्स्ट क्वेश्चन मते देखो फास्ट कहि दियो जानले आपण माने बेजल गेट द ब्रिटिश ऑफिसर्स किल्ड ड्यूरिंग द ट्राइबल अनरेस्ट द रणपुर स्टेट इन प्रेजेंट डे ओडिसा रे आपण कर रहुचा प्रमाण जानि संती खोरधा रणपुर ऑन जनवरी 5 1939 वाज मेजर रेन आपनकर रेजन लेड एल बेजल गेट तांको MRL एमडी लेखा जाय तांकर ना ही वाज द पॉलिटिकल एजेंट फ्रॉम द ओडिसा ट्रिब्यूटरी स्टेट्स मते कुहो
Okay, next mate ko, who defended the Odia language against attempts to replace it with Bengali? कौन हेतिला ना मझिरे आपनकर बेंगली लैंग्वेज आपनकर रिप्लेस हेजिवो ओडिसा सहित माने ओडिया सहित माने ओडिया लैंग्वेज किछि नथांता तो यार अगेंस्ट रे ओडिया लैंग्वेज को सपोर्ट करिकि तार अगेंस्ट रे किए वॉइस रेज करिथिले हु वाज द गुड ब्रिटिश ऑफिसर किए थिले he was also the collector of Baleshwar and Cuttack. He is celebrated for defending the Odia language none other than किए आपनकर थिले जॉन बीम्स थिले किए थिले आई थिंक बी केते एते भाबोनी त माने एते इंपोर्टेंट क्वेश्चन एते इंपोर्टेंट क्लास कोन पय करी कि फिर भी त मानकर इच्छा नै क्लास करिया को हम कोन करि परबी को सो जॉन बीम्स का सहित छिवा so John Beams, a British administrator and linguist, was a prominent British official who defended the Odia language against attempts to replace it with Bengali in the late 19th century. Okay. हाँ. Next one देखो. Which British commissioner of Odisha supported higher education and contributed to the establishment of Revensa College? जेतेबेले Revensa College कथा आसुची तांकर कमिश्नर कथा आसुची जे कि द कमिश्नर हु आपनका एडवोकेट करिथिले फॉर एडवोकेटेड फॉर द हायर एजुकेशन लीडिंग द फाउंडिंग ऑफ रेभेन्सा कॉलेज जोटा केबे हमर रेभेन्सा यूनिवर्सिटी अछि नॉन अदर दैन टीई रेभेन्सा अच्छा केबे आपनकर कॉलेज रे यूनिवर्सिटी हैला क्वेश्चन एटा मते कमेंट सेक्शन में आंसर देबे रेभेन्सा आपनकर कॉलेज रु केबे यूनिवर्सिटी को चेंज है Next मते को थॉमस एडवर्ड रेवेंसा द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ द ओडिशा डिवीजन फ्रॉम 1865 रो 1878 पर्यंत आपनकर कोन गवर्नर थिले सॉरी कमिश्नर थिले एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल in establishing Revensa College now Revensa University in 1868 रे फाउंड करिथिले नेक्स्ट मते कहि दियो who wrote the famous 2-volume work Odisha important question guys आउ थरे कहूची मने रखो okay देखो who wrote the famous 2-volume work Odisha describing the history and geography of the region history and geography हम ओडिसा रो describe करी कि दीटा वॉल्यूम वाला बुक से थिले ब्रिटिशर जे कि आपनकर कोन ताकू पब्लिश करथिले किए थिले मते किए कहि परिबो जल्दी किए कहि परिबो क्विक आंसर दे दियो किए थिले डब्ल्यू हंटर केतन राइट आंसर दे ऑप्शन बी वेरी गुड सो ए हिस्टोरियन थिले डब्ल्यू हंटर who wrote the famous 2-volume work Odisha documenting the region history रे हमर कोन and geography okay next mate कहि दियो so the famous 2-volume work titled Odisha published in 1872 describes the history geography and culture of the region was written by Sri William Wilson Hunter W Hunter कहा जाउची full title कोन थिला बुक रो Odisha or the visitors of an Indian province under native and British rule next mate कहि दियो who became the first governor of the separate Odisha province in 1937 sorry 36 एटा आपण माने समस्त जानि छथि ताकू स्किप करो के रहबे आपण करो जॉन ऑस्टिन हबैक जानि छ तो सबु एग्जाम लागि हेल्पफुल आरसी सबु एग्जाम लागि हैला मु कमेंट रे कहि छि देबा लागि एमति काई हो छन कमेंट सेक्शन में मते जणैबो ना आसो So Sir John Austin Hubback became the first governor of the separate Odisha, जेतेबेले province 1st of April 1936 रे बिहार टू सेपरेट हेतिला. Next मते कहि दियो who served as the governor of Odisha during 1941 ରୁ 46 कथा पचारि छिटी आपनकू exactly 41 ରୁ 46 रे आपनकर किए थिले क्विकली कुह सर विलियम हॉक्सबोर्न लीविस या फिर सर जॉन ऑस्टिन हबैक ये तो तांको पूर्व थिले देन जॉर्ज स्टेनविन देन जॉन बीम्स के राइट आंसर गवर्नर ओडिशा ड्यूरिंग द कोन 1941 ରୁ 46 he is none other than sir william hawthorne lewis ना served as the governor of Odisha from 1st of April 1941 ରୁ March 31st 1946 he was a British administrator who served during the critical years of the World War II exactly year जति न पचारि कि World War II टाइम रे भी पचारिबो की थिले ओडिसा रो गवर्नर ताहा लेबे आपण माने लुइस का सहित छि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मते को who served as the acting governor of Odisha in 1938 38 कथा कहि छि acting governor भाबे आपण की सर्व करि छंती from as the acting governor of Odisha none other than मने रखो की थिले जीटी वोक केतन राइट आंसर देइछो सब आज तुम मानकर बाउंस होछि धन सुना माने सब तुम मानकर आज बाउंस होछि क्वेश्चन कोन करिवो आसो so George Townsend Work served as the acting governor of Odisha
in 1938 he held the position from August 11, 1938 to December 7, 1938, covering the temporary vacancy during the Sir John Austin Hubbard's tenure. Next mate देखो, who authored a sketch of the history of Odisha? कौन कहछि? Book a sketch of history of Odisha जोटा कि 1803 रु 1828 रे पब्लिश हेतिला. तार ऑथर किए थिले? जल्दी आंसर दियो. किए थिले? क्विक क्विक क्विक. ता भितरे कौन लेखा हेतिला कहलो? जल्दी. हंटर हंटर थिले. एहे के थिले? टेनबी थिले. देखो जॉर्ज टेनबी थिले फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1873 by the Bengal Secretariat Press. This work माने Bengal Secretariat Press आपनकर हेतिला 1873, but this work is a detailed account for the 25 years of British rule in Odisha, formerly Odisha, केते 1803 रे. So content रे कौन अछि बुक रो ना covers the political, social and economical conditions of the Odisha. Clear? Next चलो. गोटे रिक्वेस्ट पिलां को ब्लॉक करंत. कोन मु त मानकर कमेंट भी देखुना ब्लॉक कोन करिम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो, व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल्स इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द कोन अछि ना लेस सीज फायर हेबा कथा ना सीज फायर एट एक्चुअली हैला सीज फायर पॉलिसी ड्यूरिंग द ओडिशा फेमाइन ऑफ 1866 पीरियड मते को कोन हबा राइट आंसर. The Lieutenant Governor of the Bengal, who is widely criticized for the ceasefire. कौन थिला आपनकर? Quick. Option C. C थिला आपनकर. Very good. के थिले? Sir Cecil Vedang का सहित relate करिबो. He was related with the माने जोथि पे आपनकर डिले हैला रिलीफ पार्टी पाले ने जोथि पे के आपनकर कोन दुर्भिक्ष बढ़ी बढ़ी चला that's why से क्रिटिसाइज हेथिले. C. Sir Cecil Vedang, Lieutenant Governor of Bengal, T.E. Revensa भी आपनकर थिले, but still as the primary British officials criticized for the applying laissez-faire policy during the 1866 Odisha famine, the refused to import the rice, believing in the non-interference with market forces, which resulted in the widespread starvation. Okay, next कौन कहछि देखो. Now, who was the collector of Puri during the 1866 famine? जेते बेले नौका दुर्भिक्ष पड़िथिला आपनकर नौका famine हमें कहउछि 1866 period रे हैना. मते को and warned about the coming starvation. कोउटा हबो राइट आंसर आपन मानकर? कोन ओडे त मान के भीतर हे गलानी के? कोन ओडे हे गलानी के का भौणी के कोन कहला? कौन हैला संप्रीति? Could you please tell me? ये कौन लिखुची कहा को? मु देखला बेले ही मेसेज देखा जाउनी. हाँ तो मेसेज नहीं कहीं दे तुम सबको. ओके लेट इट गाइस फ्लो ब्रेक करनी प्लीज. इंपोर्टेंट क्लास अछि, बहुत इंपोर्टेंट क्लास अछि, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करनी. कहूची जो माने आछंती से माने को तो माने समस्त चैट ऑफ कर दियो बिकॉज़ एबे मो पाखे टाइम नहीं मेसेज खोजी ब्लॉक करिया पे. तो माने ऑनेस्टली कहूची चैट पूरा ऑफ कर दियो क्लास कर हैला. क्लास सरी जाओ तापर खोजी खोजी ब्लॉक करिया हैला. आसो मते को हु वाज द कलेक्टर ऑफ पुरी. पुरी आपनकर कलेक्टर किए थिले ड्यूरिंग द नॉन्ग ऑफ फेमाइन? किए थिले आपनकर कहिले जल्दी किए थिले एंड राजा किए थिले तांकर 9th रेगनल ईयर रे जेतो हेतिला सेति पय तार 9th रे नॉन्ग ऑफ फेमाइन. मते कहि दियो एट दैट टाइम आपनकर किंग किए थिले पुरी रो. पुरी किंग आपनकर किए थिले एंड द इंपोर्टेंट गवर्नर जांको हम रिलेट करूची किए थिले जॉर्ज कैम्पबेल थिले 1866 रे. देखो ना उप्स बोलो ऑप्शन अछन कि सॉरी 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 कैम्पबेल नहीं बोलो 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 हां जीएन बोलो थिले. सॉरी फॉर दैट. सॉरी कि अपन कथिले द कलेक्टर जीएन बोलो वाज द कलेक्टर ऑफ पुरी ड्यूरिंग द 1866 नॉन्ग ऑफ फेमाइन who repeatedly won his the superiors including commissioner T.E. Revensa तांकर commissioner थिले but collector आपनकर किए थिले ना जीएन बोलो थिले commissioner. क्लियर. नेक्स्ट चलो मते को who headed the famine commission of 1866 of investigate the failures during the Odisha famine? एठी थिले किए ना कैम्पबेल थिले. एठी किए हेड करिसंती? जल्दी आंसर दियो. जल्दी मते को
Now who headed the famine commission of 1866 जोटा को हमें जानचे कौन ना otherwise known as the Campbell commission जे कि investigate करिथिले the failure of the British administration during the disaster period, none of the Campbell. So देखो now the famine commission of 1866 established to investigate the catastrophic Odisha famine was headed by Sir George Campbell, appointed in December 1866. Next question mate acha again कहूची guys 1599 आपनकर अछि CGL मेंस पाई आपण माने एठी मो कोड SPG10 यूज करि परिबे गोटे 10% रो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाई परिबे. आउट ऑफ दैट सहकारी बैच भी नहीं परिबे 1199 रे. एंड जे कोनोसी टेस्ट सीरीज चाहउछन्ते पिज्जा टेस्ट सीरीज आपण माने नहीं परंतु अपकमिंग आरआई एग्जामिनेशन पे बहुत हेल्पफुल हबो ओनली 399. Next देखिए who was the viceroy of India during the Odisha famine of 1866 आपण माने को कलेक्टर कहूची कलेक्टर कहिले आपण माने कोन मारिबे ना बोलो को मारिबे पूरी रा कलेक्टर पछारिबो जीएन बोलो मारिबे जदि आपण को की आपनकर फेमाइन कमिश्नर हेड करूथले ताहाले आपण माने कैंपेल को रिलेट करेबे जदि आपण को पचारा गला सेठी सेम आपनकर किए थिले वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंडिया रा वाइसरॉय पचाची ओडिसा रा फेमाइन टाइम रे ताहाले आपण माने कांकू ना सर जॉन लॉरेंस को सहित जिबे राइट. तो सर जॉन लॉरेंस जे कि आपनकर इंडिया रा वाइसरॉय थिले व्हाट he was eventually alarmed करिथिले आपनकर by the scale of the tragedy. Okay, next को देखो Sir John Lawrence was the viceroy and governor general of the India during the Odisha famine. He also served as the position from 1864 to 1869 पर्यंत थी. Next मते कहि दियो who became the first agent of the Meria agency in 1845 to suppress the Meria ritual among the Pandas. एटा रे आपण माने बहुत कंफ्यूज हेबे. राइट आंसर दिके दियो मते फास्ट देई दियो तापर आपण माने बहुत मात्रा रे कंफ्यूज हेबे मु कहि दोछि कारण पिला माने समस्त ए दिटा रे कंफ्यूज हुवंती. तो मते को फास्ट एजेंट आपण को एठी पचारि छि मेरिया जते बेला आपनकर एजेंसी मेरिया एजेंसी 1845 रे हैला तारा फास्ट आपनकर एजेंट के पचारि छि बिल्कुल भूलभाल करिवो नै. समस्त ऑप्शन बी एकमत समस्तिंकर ऑप्शन कोन एससी मैक्सेशन को सहित समस्त जाउछो he was माने he used a mix पशु आपनकर कोन पर्सुएशन. ओके द मिलिटरी प्रेशर आपनकर प्रोवाइड करिथिले मिलिटरी प्रेशर लोक मानक पाखरे पके ट्राइबल मानक पाखरे ऊपर पकेइथिले स्टॉप करिया लागि ह्यूमन सैक्रिफाइस अमंग द कॉन्डो ग्रुप. बट लोक माने कोन सुनिबे सो के थिले मेजर एससी मैक्सेशन द फर्स्ट एजेंट ऑफ द मीडिया एजेंसी 1845 रे. मते को नेक्स्ट व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर सक्सीडेड द मैक्सेशन एबे आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि पिला माने ऑप्शन कंफ्यूज हुन द एग्जाम टाइम रे कि एक्चुअली मैक्सेशन का पर जे कि 500 पोटेंशियल्स को नै कि मेरी विक्टिम सिंगल पर सीजन रे 500 लोकन को उद्धार करिथिले आनी जिंस को बंद करिथिले सीए थिले आपनकर कि ना जॉन कैम्पबेल. एटा को आपण माने राइट आंसर मारबे. क्लियर एटा को आपण माने राइट आंसर मारबे पक्का. देन नेक्स्ट देखो ना Lieutenant Colonel John Campbell जे कि आपनकर was the British officer who succeeded Samuel Charter Macpherson and rescued over 500 potential Meria victims in a single season. Next मत देखो who first reported the existence of human sacrifice in Gumsar to the British government in 1836. ताहाले मते कहि दियो जने सीनियर मेंबर थिले जे कि the board of revenue थिले जे कि फर्स्ट टाइम पाइन डिस्कवर्ड करिथिले एंड रिपोर्ट करिथिले द एक्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन सैक्रिफाइस इन द गुमुसर एरिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1836. या ओके नथिले से थिले कोन रशेल कोन एते सारा लोक रशे की ठिया हिचोंदी देखि कि जाय कि मिस्टर रशेल दौड़ी की जाय कि ब्रिटिशर्स मानक पाखरे कंप्लेन कर दे कि एठी गोटे किछि ह्यूमन सैक्रिफाइस भलिया गोटे बहुत खराब जिंस होउछ. ओके next chala so right answer G.E. Russell, a senior member of the Madras Board of Revenue, was the first to officially reported the existence of human sacrifice in the Gumusar area. Clear eti jinsa. Next kuha who wrote an account of Odisha proper or Cuttack in 1825. कोन पचारि छेटी मते कुआ ना फेमस बुक जोटा कि आपनकर 1910 मसिया रे पब्लिश हेइथिला जदियो 1825 रे लेखा सरीथिला ताहाले मते को 26 टा ओडिसा रो 26 टा प्रिंसली स्टेट मानक ऊपर लेखा जाइथिला से बुक कोन ना 26 प्रिंसली स्टेट्स मानक ऊपर ए बुक लेखा जाइथिला एंड दैट किए लिखिथिले ना एलईबी कोबडेन राम से लिखिथिले. क्लियर देखो भूलभाल हे गला कि राम से लिखिथिले ना 28 टा कोन लिखिथिले रे ना स्टिलिंग लिखिथिले भूलभाल हे गला बोधे ना 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 ठीक अछि एटा काई लिखोछु ठीक अछि
चले किए थिले एड्री स्टिलिंग थिले सियोर ठीक अछि कोन करूची एटा को कोन मारूची ओके देखो एड्री स्टिलिंग थिले कोन करथले ना वन ऑफ द आर्टिस्ट ब्रिटिश ए थिले जे कि स्कूल जने बहुत माने कोन भलो स्टूडेंट भी थिले स्कॉलर्स थिले एंड राइट आपन भलो राइटर्स भी से प्रोवाइड माने लोक मान को चुकुंदिन कि आपन माने सपोज गोटे एरिया रे आपन को गाँ रे आपन गोटे पाठ पढ़ी कि भलो कलेक्टर हे गले गाँ का सारा पिला आपन मान को फॉलो करिवे कोन पाठ पढ़िलु केमिति कलेक्टर हेलु बाकी डॉक्टर इंजीनियर सब भूली जिवे जो माने भलो पाठ पढुतिले से माने आसुतिले कोन ना केमिति हमें कलेक्टर होबु आपन मान को घर आगे आसी लंबा लाइन लगे देबे कोन केमिति स्ट्रेटजी थिला केमिति प्रिपरेशन करथले कलेक्टर हेला बाकी तांकर ड्रीम को पछरे पके दिले तो ए जो एड्रियो स्टिलिंग थिले आपन कर कोन थिले ना जने स्कॉलर स्टूडेंट थिले जने राइटर भलो थिले तो तांकोठो जेते माने हिस्ट्री जियोग्राफी ऊपर से हमर ओडिसा ऊपर बहुत सारा लिखि दिले एंड अकाउंट ऑफ ओडिसा प्रॉपर एंड कट जोटा कि 1825 रे पब्लिश हेतिला एटा को मन रखंतु आपण माने ठीक अछि 1929 1910 टा आपण डिफरेंट टॉपिक ता थिला एटा नै मने पड़ी गला दिस वाज इज नॉट ओके लेख देखा so Andrew Sterling wrote an account of Odisha proper or Cuttack in 1825 this work often titled an account geographical statistical and historical Odisha proper or Cuttack is a comprehensive early colonial study of the region next kon कहछि देखो इठी रुक ओके देखो which British scholar again अपन को क्वेश्चन पछाछु which British scholar authored the famous work Feudatory states in Odisha in 1910 ए जो feudatory state ता आपनकर मोर मने पड़ी गला सेटा 1910 या परटा ओके तो मते को 1910 रे आपनकर feudatory को राइट आंसर मते टिके दियो which British scholar authored the famous work Feudatory states of Odisha in 1910 1910 कथा कहिले आपण माने कोठी के आसीबे ना एठी आसीबे आपण माने रामसिंह को पाखु 1910 रे एठी आपण मानकर जो रामसे लिखिथिले Feudatory states एठी आपणकर 26 प्रिंसली स्टेट्स मानक विषय रे ओके प्रिंसली स्टेट्स मानक विषय रे लिखिथिले ओडिसा so the famous work Feudatory states of Odisha 1910 लिखिथिले was authored by the British scholar and Indian civil services officer L.E.B. Cobden Ramsay next mate ko which committee was appointed in 1924 to investigate the merger of Odia speaking tract 1926 रे आपनकर को गोटे कमिटी बसी थिला दी जना पर्सन को नै कि CL फिलिप एंड AC डफ दैट्स व्हाई तांकर ना हला कोन फिलिप डफ कमिटी सो ऑब्वियसली हमें कहां सहित जिबा फिलिप डफ कमिटी सहित द कमिटी अपॉइंटेड इन 1924 to investigate the merger of Odia speaking tracts particularly those under the Madras presidency was Philip Duff committee members के थिले it was two man committee consisting of Mr. CL Philip and आपनकर AC Duff clear next मते को फीस ब्रिटिश क्लास इते इंपोर्टेंट अछि बट त माने क्लास ऊपर फोकस करूना बहुत खराब लागु छी विश्वास करो which British officer was sent in 1848 to capture the Raja of Anugul leading to the annexion of Anugul 1848 कथा कहूची राजा ऑफ अनुगुल जोटा कि सेतबले ढेंकानाल अंडर रे आपनकर थिला माने मर्ज हेकी थिला त मते कहि दियो की आपनकर पठैथिले अनुगुल राजा को कैप्चर करबा लागि जल्दी किए पठैथिले कॉल पठैथिले कॉल 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 कोन मालन जे कैम्पबेल हेबे ना यस लेफ्टिनेंट कैम्पबेल आपनकर लेफ्टिनेंट कर्नल कैम्पबेल थिले कैम्पबेल स्पेसिफिकली आपनकर कर्नल जॉन कैम्पबेल तांको कहूचे वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर who led the forces occupy and annex the state of Anugul in 1848 officially confiscating it on September 16 1848 next मते को राजा हेते बेले किए थिले ना राजा थिले सोमनाथ सिंह मते को who led the first English expedition to Odisha in 1633 and obtained permission for trade from Mughal governor एटा गोटे important question guys exam में पढ़ला भले question हैला त मते को जल्दी आंसर दियो ओके यार आंसर टिके दियो किए थिले आपनकर सेही टाइम रे किए थिले आपनकर who led the first English expedition जो माने आसी के आसीथिले 1633 रे
ट्रेडिंग पर्पस रे एंड आपनकर मुगल मानकटू मुगल गवर्नर मानकटू परमिशन नेथिले कि राइट नेथिले कोन राइट नेथिले सिथिले कार्ट राइट देखो के थिले ना द फर्स्ट इंग्लिश एक्सपेडिशन टू ओडिशा इन 1633 वाज लेड बाय रॉब कार्टराइट एंड अराइवल केबे हेतिला अप्रैल 21 1633 रे को जगह रे हेतिला हरिशपुर रे ओडिशा रा कोस्टल एरियाज एंड परमिशन Cartwright traveled to Cuttack to meet the Mughal governor of Odisha to obtain the permission for trade and to establish a factory. Then outcome rekon astila following the negotiation, the English established their first factory in eastern India. कोठी ना हरिशपुर पचारुची क्वेश्चन हरिशपुर आपनकर प्रेजेंट को डिस्ट्रिक्ट रे प्रेजेंट रहउची ना जगतसिंहपुर एतिक दिन से मन रखिबो क्लियर इन 1633 आपता परे आपनकर अनदर कोठी ना आपनकर पिपली बालेश्वर धरे बसिथि हैला नेक्स्ट मते को हु इज मेंबर ऑफ Cartwright's party wrote the first English account of Odisha and described the Jagannath temple कहले यार आंसर कोन हबो भूल हे गला भूल हे जदी चलिबो ठीक कर हैला आसो यार आंसर दियो द मेंबर ऑफ Cartwrights आपन को पचारुची Cartwright हेले आपनकर कोन आसी कि मुगल गटू परमिशन नेथिले बट एबे पचारुची कोन हु इज मेंबर ऑफ Cartwrights party wrote the first English account of Odisha and described the Jagannath temple ऊपर आपन को लिखिथिले के थिले से थिले विलियम ब्रूटन के थिले पुनी डी मार देलानी ब्रूटन के थिले विलियम ब्रूटन ए मेंबर ऑफ राल्फ Cartwright 1633 रे ब्रिटिश मर्चेंट डेलीगेशन इनटू ओडिशा who wrote the first English account of the region and described the Jagannath temple Bruton document କରିथिले नेक्स्ट मते को who was appointed कोन पचारिसी who was appointed as the first commissioner of Cuttack in 1805 1803 रे annexion सरी गला तो 1805 रे फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कटक भाबरे एस्टैब्लिश माने आपनकर स्टेबलाइज हेथिले द रीजन आफ्टर द इनिशियल कॉन्क्वेस्ट कोन जय राजगुरु रेबिलियन का पीरियड 1805 कथा कहूची ता माने सेही पीरियड रे के थिले आपनकर रॉबर्ट केर थिले देखो so was appointed as the first commissioner of Cuttack in 1805 he was tasked the stabilizing British administration in Odisha बुझा पडुची ना नाही अंतो पळेई गायत्री सीमांचल कौन सब यही पिला नुआ पिला तो के नाहंती संघमित्रा देखी जो माने अपन तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस ठीक है सब्सक्राइब करी के जीवो देखिबा हैला संघमित्रा सुरेखा ओके नेक्स्ट चलो कोन क्वेश्चन किछि मजा लागुछि ना नाही क्वेश्चन मजा लागुछि ना बोर लागुछि काली तो तमन को बोर लागुथिला आज मजा लागुछि ना नाही की पहिला ए नेक्स्ट क्वेश्चन कहि दियो Which commissioner of Cuttack was known for his reports on coastal districts and early land revenue settlement? Coastal districts उपरे commission करिथिले and early land revenue settlement उपरे करिथिले किए थिले को the commissioner and a commissioner of Cuttack known for his detailed report on the coastal districts and his role in early revenue settlement. कौन हबो काली थारु लाइक करि देइछो हां की श्रीराम एमती लाइक कले हबनी चलिबनी तो ये थिले किए जॉर्ज स्टॉकहोम के थिले जॉर्ज स्टॉकवेल तो देखो जॉर्ज स्टॉकवेल ए कमिश्नर ऑफ कटक नोन फॉर हिज डिटेल रिपोर्ट्स ऑन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन द रोल इन अर्ली लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स नेक्स्ट मते को हु वाज द फर्स्ट कलेक्टर ऑफ बालेश्वर एंड लेटर बिकेम द कमिश्नर ऑफ कटक के थिले फर्स्ट कलेक्टर जदी बालेश्वर पचरची आखि बंद करके आपण माने रिकेट्स को मारिबे का को हेनरी रिकेट्स लेटर से कोन कटक रो कमिश्नर भाबरे हेले ही वाज हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज कोन माने हम कहि परबा जदी एम्पैथी टुवर्ड्स द लोकल्स एंड हिज एफर्ट्स ऑफ द आपनकर कोन माने लोक मानक प्रति ताकर ओटे अलगा प्रकार दया भाव थिला ओके नॉट लाइक अदर ब्रिटिशर्स नेक्स्ट देखो सो हेनरी रिकेट्स 1802 to 1886 वाज द फर्स्ट कलेक्टर ऑफ द बालेश्वर एंड लेटर सर्व्ड एज द कमिश्नर ऑफ द कटक ओके नेक्स्ट मते कहि दियो व्हिच कलेक्टर ऑफ पुरी इज फेमस फॉर द खोर्धा सेटलमेंट कहितली पचारिबा आपनकू क्वेश्चन जय राजगुरुंगर सरी गला एबे खोर्धा सेटलमेंट कथा को एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स तो खोर्धा सेटलमेंट कथा एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कथा पचारछि द कलेक्टर ऑफ पुरी फेमस फॉर द खोर्धा सेटलमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन द टेंपल टाउन पुरी कथा कहिछि ताहाले आपण माने कहांकू ना विल्किंसन के हेबे ऑप्शन बी घोषि देछ ना गूगल कर दो जगरे सब घोषिचो ना गूगल कर दो विल्किंसन हेबे नेक्स्ट मते को विल्किंसन इज द कलेक्टर ऑफ पुरी फेमस फॉर द खोर्धा सेटलमेंट एंड द सिग्निफिकेंट
administrative reforms in Odisha during the 19th century. He is recognized for his invaluable work on the settlement and for development of the region as noted in the Utkal Putra in 1874. Next mate who led the suppression of the Paika rebellion in 1817 and accepted the surrender of Boxi Jagabandhu. କହିଥିଲି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସରି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ତାପରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଅମିତ 35 କଣ ବି ହବ କହିଲଣି 35 କଣ ମାଛିମୁ କଣ क्वेश्चन थिला Which commissioner of Cuttack was known for his report on coastal districts and early land revenue settlement? George Stockham अभी तो रॉबर्ट के नहीं अरे रॉबर्ट के आपनकर ऑल ओवर जदी ओडिसा कथा कहबा ही वाज द कमिश्नर बट कटक कथा पचरा जाउची से जॉर्ज स्टॉकहोम हेबे सॉरी स्टॉकवेल हेबे एटा राइट आंसर आपनकर नेक्स्ट चलो 38 को मते हु लेड द सप्रेशन पाइका रेविलियन आपनकर की सप्रेस करथिले क्विक पाइका रेविलियन कथा पचारुची ये हेबे आंसर 1817 मसिया जल्दी ओके हु लेड द सप्रेशन 1817 कथा को मेजर जनरल गब्रेल के थिले गब्रू सैता नाकी गब्रेल मार्टिनडेल देखो so के थिले the suppression of the Paika rebellion of 1817 in Odisha was primarily led by British East India Company forces under the direction कहार थिला ना मेजर जनरल सर थॉमस हिस्लॉप थिले अरे हिस्लॉप एटे ऑप्शन अछंती कि नाते तो ये कोन मार देछि एंती एंड मैजिस्ट्रेट एमपी थिले हिस्लॉप तो नाहंती एमपी भी नाहंती हिस्लॉप नाहंती एमपी भी नाहंती 1817 रे एटा समथिंग आपनकर चेंज कर दबा एटा को 38 नंबर टा को म तमन को क्लैरिफाई करके आंसर दे हला next को now which British officer played an important role in suppressing the Khond uprising led by Chakra Visoy Dora Visoy मने पडुची तो मते कुह डोरा का पोर आसीले तांको निफ्यू चक्रा विसोई होना नहीं मते कुह सो किए थिले जे कि चक्रा विसोई वाला रेविलियन को जोटा कि 1837 रु 1856 रे हितला सेकंड फेज रे तो ताको आपनकर रिलेट करथिला जल्दी आंसर दियो किए who played a critical role suppressing the Khond uprising during 1837 to 1856 by that was led by Chakra Visoy किए थिले जल्दी एठी थिले मैक फ्रेश हाँ तो देखो तो मेजर एसी मैकफेशन played a critical role in suppressing the Khond uprising 1837 to 56 led by Chakra Visoy in Odisha. Next मते कहि दियो which British commander was killed during the battles against Surendra Sai's rebels in Sambalpur. British officer किए थिले आपनकर सुरेंद्र साई को अगेंस्ट रे कोन तांको धरिबा को जाई कि से रिबेल अगेंस्ट तांकर डेथ हेतिला जल्दी कहि दियो किए थिले वुडब्रिज किए थिले कैप्टन वुडब्रिज काठ को पूरा काटी देथिले ना कि कैप्टन वुडब्रिज वाज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल्स अगेंस्ट सुरेंद्र साइस रिबेल्स इन संबलपुर बैटल आपनकर केबे हेतिला ना वुडब्रिज वाज किल्ड इन फेब्रुअरी 12 1858 हैला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ परसी गेरा एटा मने पड़िबो एटा आपन एग्जाम रे पछरिबो नेक्स्ट मते को who administered the oath of office to the first governor of Odisha in 1936 एते बेले 1936 कथा कहूची the first governor of Odisha कथा कहूची तो किए थिले who administered that means the chief justice भाबरे आपनकर काम करचंदी किए ना सर कॉटनी किए थिले कॉटनी टेरल थिले ढोकी की हजम करी होनी अच्छा वेनम तमे करि परनो वेनम करि परनी हजम हो देखो सर कॉटनी टेरल द चीफ जस्टिस ऑफ द बिहार एंड ओडिशा हाई कोर्ट एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस सर जॉन ऑस्टिन हबर्ट थिले द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा ऑन 1st of April 1936 हैला एठी आपन को पचाछि द एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द फर्स्ट गवर्नर पर ओथ टेकिंग किए करथिले ताहा एठी आपन माने टेरल को मारी गवर्नर हेले आपन माने जस्टिन हबर्ट नेक्स्ट चलो मते को क्विज कमिटी हेडेड बाय सैमुअल ओडोनिल डिटरमाइंड the boundaries of the proposed Odisha province in 1931 जेतेबे 1931 कथा पचारिछि ताहाले आमे जानछि that is कोन Samuel O'Donnell that is headed O'Donnell committee in 1931 famous O'Donnell हैला ओडिसा रा बाउंड्री कमिटी आमे ताको कहूछे next question so the committee headed by Samuel O'Donnell that determined the boundaries of the proposed Odisha province in 1931 was Odisha boundary commission हैला next को मते which British कोन पचारिछि which
British officers were members of the Philip Duff Committee of 1924. 1924 रे आपण माने फिलिप डफ कमिटी सहित जे अछि जदी दी जण थिले कोन सीएल फिलिप एंड एसी डफ काम खत्म होन नै मते को बट एटी कोन पछे आपण मानकू मेंबर्स पता अछि तो फिलिप डफ 1924 माने काम खत्म आ भाबेर कोन अछि ना कि 1924 रे आपण कर दी जण मेंबर सीएल फिलिप एंड एसी डफ सीएल फिलिप आपन को अंक भितर पचारिबो ब्रिटिश कमिश्नर के थिले फिलिप थिले कमिश्नर कलेक्टर थिले आपन कर डफ मन रखिबो ए क्वेश्चन आपन को सब बेले पढी पढी त माने फिलिप डफ मन रखिदिबो कि तांका भितर कमिश्नर की एंड कलेक्टर की त माने जानथिबो एटा क्वेश्चन पचार दबा तापर भाबिला ठीक काम जीवन हैला नेक्स्ट चलो मते को व्हिच मेंबर ऑफ द साइमन कमिशन सपोर्टेड द लिंग्विस्टिक डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस को आपनकर सपोर्ट करथिले कि व्हाइल प्राइमरीली आपनकर कोन कहउछ तांको हमें क्लेमेंट अंटली ताको आपण माने कोन जानछंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके as part of the Simon Commission दिसे थिले he took a knee interest in the Odisha Hub Committee तो आमे कहि परिबा ओडिसा जते बेले आपण सब कमिटी बसिला ता क्लेमेंट अटली थिले आपण द पर्सन ए मेंबर ऑफ द साइमन कमिशन एंड फ्यूचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनिले heavily supported the creation of a separate Odisha province as chairman of a subcommittee utterly recognized the linguistic legitimacy of the demand of the supported the Odisha tract. Okay, next मते को who compiled the Bihar and Odisha district ये compile करथिले मते कहिबो पछाची who compiled the Bihar and Odisha district gazettes किए compile करथिले he was an administrator and historian जे कि compile करथिले Bihar and Odisha gazettes को which are still used as a primary historical records for कोन जते बेले हमर सेपरेशन हेतिला रीजन को सो सी नॉन अदर देन आपनकर की हेबे आपनकर ओ मैली LSS ओ मैली देखो the Bihar and Odisha district gazetters were primarily compiled by British Indian Civil Services जे थिले आपनकर LSS ओ मैली being the most prominent author covering numerous districts in the early 20th century and PT Mansfield थिले तांकर ऑफिशियल ग्रुप मध्यरु जणे PT Mansfield एडवर्ड लिशर JW जेम्स एमाने ताकू कोना ना हेल्प करथिले रिसर्च करिवारे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन मते को हु अथॉर्ड द गंजाम डिस्ट्रिक्ट मैनुअल the author of the book Ganjam district manual this is a foundational text for the history of the South Odisha okay तो किए थिले जल्दी आंसर दियो राइट आंसर होची T से Maltby see the Ganjam district manual authored by Thomas James Maltby तांको सहित एडिट किए करथिले ना जॉर्ज डाउनटन लेमन published in 1882 this comprehensive reference work details the history of geography and administration of the Ganjam district during the British colonial period and author Thomas James Maltby यदि आपण एडिटर पचारुछि ताहाले लेमन थिले एडिटर पब्लिकेशन हियर केबे 1882 रे आपणकर पब्लिश हिथिला क्लियर एतिकी थिला आजिरा सेशन ओके नथिंग मोर नथिंग लेस होप जो 46 टा क्वेश्चन अछि जेते बेले भी आपन को कोन से ब्रिटिशर्स विषय रे क्वेश्चन पचारिबा नथिंग बियॉन्ड इट ए क्लास टा बहुत इंपोर्टेंट आपन मान ओके तो अगेन कहूची जो माने क्लास चैनल को पहले सब्सक्राइब करना गाइस चैनल को सब्सक्राइब करि दियो एंड 1599 रे आपन माने स्पंदन सीजीएल मेंस बैच को एनरोल करि परिबे विथ माय कोड SPZ10 एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाइ सहकारी बैच फॉर जूनियर असिस्टेंट पाइ आपण माने पारि 1199 रे बीजा टेस्ट सीरीज आरआई पाइ अपकमिंग आरआई एग्जामिनेशन पाइ बहुत हेल्पफुल होबो ओनली 399 रे अवेल करि पारिबे out of that जदि आपण माने मो कोड SPZ10 यूज करूछंती these all things I am going to provide you okay and telegram channel होची वेदांग क्लासेस रो here is the scanner आपण माने स्कैन करि दियंतु वेदांग क्लासेस रे जॉइन करि जानतु टू गेट द फ्री पीडीएफ एल्स आपण माने मते एठको मेसेज करि देबे मो WhatsApp ग्रुप रे जॉइन हेबा लागि सो दैट मो आपण माने को पीडीएफ सेठी भी शेयर कर परिबी एंड बहुत सारा जिंस आपण को सेठी भी शेयर करे ओके 9124730510 कालीर टॉपिक कोन भाबिनी देखिबा जहा गोटे मने पड़ला से टॉपिक रे डिस्कस करिवा क्लास आनिबा हैला थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच हैव ए गुड नाइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बट फर्स्ट ऑफ ऑल do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world thank you so much jai jagannath and I love you all bye bye take care